Okay, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lab session 2. So, like जो हमने पिछली लैब में हमने बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन जो NCBI और डिफरेंट डेटाबेसेस के बारे में हमने समझा था कि उसमें हम कैसे जो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, देन उसको हम फिर एनालाइज करते हैं while using computational techniques, and these computational techniques you can use through the there are different like softwares you can find out on Google, but internet, but the very organized form of XPC will provide you the different biological tools to analyze. So इसके अलावा हमने NCBI को डिटेल में देखा था कि हाउ दिस NCBI will help us to provide us that biological information. हमने देखा कि there is a gen bank which will provide us the nucleotide sequence and protein sequences. So again, you can just have a preview that biological databases mein what we can find the what kind of information it will contain for the researchers, that is genomics means nucleotide sequences and information about nucleotide, which is ATGCs of DNA or RNA, and then there is a proteomics is a field of study of the protein, and then metabolomics field is that the all metabolic pathways, how the cellular processes are working in it. In the same way, there is a microgene expression. This is a method microarray in which you can find the expression of gene in different in different formats. So there is another thing is that phylogenetics में what these are all the applications of bioinformatics. So I'm talking about the bioinformatics applications. These are all types of field areas of applications of bioinformatics. So the other one is that phylogenetics में you will find the relationship in between the descendants and ancestors. You can find that there is some traits we are getting or inherited from our parents, from our grandparents even. So we can also find it out कि क्या variations जो है वो आप offspring में या children में आई है जो हमारे inheritance में means that कि you can find you will get all type of traits should be from your parents, but there are different variations will be occur in the descendants. इसके अलावा what you will find on it, uh, I have already talked about phylogenetic to understanding the evolution of species. जितनी भी species हैं उनकी evolution को हम understand कर सकते हैं while using the biological information, and that will facilitate this type of knowledge will help us to facilitate the fight against diseases. जितनी भी diseases हैं उनको cure करने में हमें help मिल सकती है, assist in the development of medication and in discovering basic relationship among species in the history of life में हम basic information को हमें जब मिल जाती है, and then we can discover and हम मेडिकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं और बेसिक रिलेशनशिप्स जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं कि अगर हमें नॉलेज होगा तो वी कैन फाइंड द फ्यूचर, वी कैन फाइंड द सर्वाइवल things about the future diseases. Just like अभी जैसे कोरोना वायरस जो है हम जैसे हम सफ़र कर रहे हैं, we are suffering from that. So every research like everybody is seeking the cure of that from that virus, but still they are working. Somehow people have find the solution while using such type of biological information. So there is a general databases you can find like just like NCBI, and there is a specialized database you can like जैसे NCBI में you can find all type of information. ठीक है, आप उसमें जो है categories में जाकर अपनी specialized database just like अगर आप you have NCBI as a general database, and then you can find a specialized database. अब specialized database क्या होगी,
just like you can find you want to find the nucleotide sequence, so this is specialized. And if you want to find the proteomics database, you can, it is specialized. If you want to find the omim database, so this is specialized. मतलब ये सब कैटेगरीज में आपको क्लासिफाइड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक स्पेशलाइज फॉर्म में डेटाबेस मिल जाएगी. इसी तरह से प्रोटीन सीक्वेंस की एक अलग डेटाबेस है, इसी तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की एक अलग डेटाबेस है. सो दिस इज ऑल टाइप ऑफ स्पेशलाइज डेटाबेस. जनरल में आपको जनरल में भी बहुत सारी डिफरेंट डेटाबेसेस जो है वो इंटीग्रेटेड है. सो अगेन we have talked a lot about the biological information and biological databases. So now is the time to explore some of them. We will start from NCBI. Okay. This is the web page of NCBI, National Center of Biological Biotechnology Information. So यहाँ पर आप, this is the web URL of NCBI. Just type NCBI on Google, on search engine. You will directly went to the will go to the that database or community. Okay. Now you can see the home page of NCBI, and this is the left pane. You can find all resources in chemicals and bioassays, all type of information like genetics and medicine, homology, literature, proteins, sequence analysis, taxonomy. You can find the relationship of different species and what kind of variation. And these are all just whatever you want to find, you can find through this. And on this page, if you have a data or manuscript, you can deposit, you can download, you can if you need some tutorials, if क्योंकि NCBI पर भी कुछ जो हैं tools हैं और data information है, तो उसके video tutorials भी आपको मिल जाएंगे. You can attend that class here. Or if you want to use some NCBI APIs and code to build some application, you can use them. और इसके अलावा एनालाइज, अच्छा एनालाइजर में आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो डेटाबेसेस है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं. यू कैन फाइंड थ्रू देम थ्रू दिस टैब और एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट्स और लाइक रिसर्चर्स ने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, यू कैन एक्सप्लोर देम. सो this is the popular resources, PubMed, Bookshelf. This is the BLAST we have talked about in the previous lab session. Nucleotide sequence, genome, SNP, single nucleotide polymorphism, gene, protein, and PubChem, in which you can find the compounds of the protein. So this is the news feed, NCBI news and blogs. Every on daily basis you will find what is new thing is going on, the webinars, the seminars, what kind of the latest research has been done. You can just find through this news feed, and you can also do blogging on it. Okay, the most important thing is that this is the, here you can find which type of database you wanted. So commonly we will do nucleotide sequences. This is nucleotide. If you want to find the sequence of proteins, you can select protein. If you find the OMIM database, you can find OMIM. OMIM is, you know that the diseases databases of genetic diseases. So this is up to you what kind of information you wanted. But commonly जो हम primarily we will do some when we will start our work, we will start from the nucleotides and proteins. So first we will start through the nucleotide. This is nucleotide database, and I'm going to find the sequence of, for example, we will find the sequence of surface glycoprotein in SARS-CoV-2.
Okay, and you know that the SARS-CoV-2 is the name of the coronavirus, and अब जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है सार्स कोवी टू एक वायरल ऑर्गेनिज्म है एंड उसका जो सरफेस प्रोटीन है वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जो उसकी सरफेस पे प्रोटीन का सीक्वेंस है या जीनोम है यू कैन जस्ट find to such type of query और just we are just trying to learn कि हम query कैसे देते हैं और हमें किस तरह की information मिलेगी. So let's open it. Okay, this is a surface glycoprotein जो surface है क्योंकि कोरोना वायरस जो वायरल ऑर्गेनिज्म है उसमें सरफेस है उसकी मेम्ब्रेन होगी एंड देन उसमें उसकी एनकैप्सुलेशन होगी उसकी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स वाई बिकॉज हर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई उसका स्ट्रक्चर है ठीक है एंड देन देयर इज इनसाइड देयर इज जिसमें आपको मिलेगा RNA genome material you will find it out but we are just want to find the surface protein उसका जो surface genetic material जिस protein से वो उसकी surface बनी हुई है we will just try to find it out. So here you can see this is the structure of coronavirus but graphical view but we are not going to watch it out right now. So just see SARS-CoV-2 is abbreviated as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or you can see 29,617 base pairs linear RNA इसमें RNA जो है वो उसका linear RNA है and you can just click on gene bank. अच्छा इसमें भी you can see FASTA is a format of genome sequence or you can find graphics and taxonomy is this is the protein and we have searched for the nucleotide उसकी जो previous stage है उसका nucleotide है nucleotide sequence हमने वो we are just finding it that but we said we have query for protein, surface protein of SARS-CoV-2. That's why you have an option for protein. So let's see on GenBank what is available. अच्छा ये उसका unique ID है जो हमने query दी है क्योंकि there are a number of queries. There are number of search hits जो आपने जिसकी क्यूई किया है that is SARS-CoV-2 का आपने surface protein किया and there are number of items जो search में आपको मिल गए हैं that is 22,066. अच्छा so every like जिसने भी because everything is deposited on the database और डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जो है सेम टाइप की है बट उनकी we will find the unique ID of every information so that अगर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और फ्यूचर में अगर हम इसी इंफॉर्मेशन पे काम करना चाह रहे हैं तो वी नीड दैट यूनिक आईडी ठीक है वाई बिकॉज क्योंकि डेली बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो रही है एंड यू विल लॉस्ट योर इंफॉर्मेशन जिस पर आपने काम करना स्टार्ट किया है सो while using this unique ID you will directly find this same page and same information. अच्छा अब आप ये देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि what is available. इसमें हमारे पास 29,617 base pairs है और this is the RNA genome. This is not the DNA, this is the RNA because this virus is RNA. So it was deposited or published on 1st May 2020 और ये उसकी definition है accession number. इसके accession number is also unique ID just like this one.
ठीक है. Point 1 means it's the first version of that information. अच्छा, अब ये ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म क्या है? दिस इज द, वी नो दैट दिस इज द SARS-CoV-2. रेफरेंस है ऑथर्स, किन किन ऑथर्स ने इस इंफॉर्मेशन पर काम किया है. दिस इज द लॉन्ग डिटेल्स. टाइटल क्या है? टाइटल मीन्स कि जिस पर these authors have worked for this paper. Genomic surveillance reveals multiple introductions of SARS-CoV-2 into Northern California. मतलब different countries were working on such type of information. That's why you are having a lot of information on the same virus. Acha, this is the title. Journal means this is unpublished right now. Acha, journal basically is the you can say that कि जैसे कि जो हम जस्ट लाइक के बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर्स होते हैं, इन द सेम वे जर्नल्स भी जो पेपर पब्लिकेशंस होती है, रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, उनको ये अप्रूव करते हैं आफ्टर प्रूफ रीडिंग. अच्छा, रेफरेंसेस इसमें जो बेसिस है, बेस पेयर्स जो है वो इतनी उनकी लेंथ है. एंड दिस इज अगेन अनदर ऑथर्स एंड दिस इज अनदर डायरेक्ट सबमिशन है एंड सबमिटेड अनदर पेपर है. दिस वाज अनदर पेपर. ओके, these are genes. Okay, now we will let's see what is FASTA. We have talked about कि FASTA एक इनपुट है which is न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में हमारा जो मेन पर्पस था न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को सर्च करने के लिए, उसमें हमें सीक्वेंस चाहिए था and we want to work on sequence. So here this is the nucleotide sequence, क्योंकि इसकी लेंथ जो थी वो हमने देखी थी कि which was like 29,000 plus 29,000 plus base pairs जो है वो you can find it out. Okay, अच्छा, जो मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग है फास्टेस्ट सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज के इट स्टार्ट्स विद द ग्रेटर साइन. फिर उसके बाद उसका आपको मिलेगा यूनिक आईडी, देन ऑर्गेनिज्म नेम, एंड उस ऑर्गेनिज्म में जो जो दीज आर द डिफरेंट जीन्स. बिकॉज ये पूरा क्योंकि ये पूरा सिर्फ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, बल्कि इसमें सारे का सारा उसका कंप्लीट जीनोम है. दिस इज द कंप्लीट जीनोम एंड दिस इज द कंप्लीट जीनोम. अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि दीज आर द ATGCs, द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब ये जो NN है, दैट मीन्स कि यहाँ पर गैप्स थे. दीज आर द गैप्स, or you can say that के uncoded region. So this is about severe acute respiratory syndrome. Now we will see okay, now we will see about the proteins. जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस को सेलेक्ट किया है, इसी तरह हम प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस को सर्च कर लेते हैं. This is about proteins, and now we will find any protein. If you know insulin, you will find insulin. Okay, अच्छा, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में आपको बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर्स हैं ATGCs, एंड इन प्रोटीन की डेटाबेस में आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे. अमाइनो एसिड मीन्स कि उनकी जो लॉन्ग चेन है वो आपको मिलेगी. सो दैट्स व्हाई इन प्रोटीन डेटाबेस अब आपकी जो रिजल्ट है वो आपको अमाइनो एसिड में मिलेगा. और अमाइनो एसिड्स आर 20 अमाइनो एसिड्स जिनके एक लॉन्ग चेन होगी. यू विल फाइंड ऑन दिस डेटाबेस. अच्छा, हमने इंसुलिन को सर्च किया था. वी विल फाइंड, अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटीन नहीं है क्योंकि दिस इज द एक्चुअल प्रोटीन डेटाबेस. सो इफ यू वांट टू फाइंड इट्स न्यूक्लियोटाइड, तो आप न्यूक्लियोटाइड भी सर्च कर सकते हैं. इसका पबमेड, इसके बायो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, और इसका फास्टा सीक्वेंस है. नाउ वी विल क्लिक ऑन फास्टा.
तो ये है हमारा प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन। दिस इज द रेडासाइन यूनिक आईडी इंसुलिन, जो प्रोटीन का नेम है, और इसकी सोर्स क्या है, कैलिफोर्निया है, और ये इसका सीक्वेंस है। और सीक्वेंस की लेंथ क्या है, 156 अमाइनो एसिड प्रोटीन्स। अच्छा, एक तो हम एनसीबीआई में हम इसी प्रोटीन को सर्च करें। अगर हम इस प्रोटीन को gene ID, if we will find this gene ID on, there's another database which is PDB and UniProt. First we will find PDB. PDB is the protein data bank. यहाँ पे आपको प्रोटीन सीक्वेंस भी मिलेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। और जो हमने एनसीबीआई में सर्च किया था, दैट वाज ओनली protein sequence. So here is the PDB. This is the home page of PDB. You can just explore different databases just for your interest and knowledge के different databases क्या काम करती हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि NCBI में हमें किस तरह की information मिल रही है, और जो basic information आपने कैरी like you will find it out proteins and nucleotides, ठीक है। अब इसमें भी जो organized specialized जो databases है, how you will find it out, this is अच्छा। अब इस जो हमने सर्च किया था, this is the gene ID. I think we will try to find it here. Gene ID on PDB. Okay. हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जो हमने इस पर्टिकुलर इंसुलिन जो हमने यहाँ पे सर्च किया है, NCBI रेफरेंस सीक्वेंस। अच्छा, इसके डिफरेंट आपको यूनिक आईडीज नजर आ रहे होंगे, ठीक है। दिस इज एक्सेशन नंबर, और जेन बैंक में डिफरेंट इसकी आईडी होगी, और प्रोटीन डेटाबेस में इसकी डिफरेंट आईडी होगी, और यूनिप्रॉट या स्विस प्रॉट पे इसकी डिफरेंट आईडी होगी। यूनिप्रॉट और स्विस प्रॉट और प्रॉट के नाम से आपको नजर आ रहा है कि से समझ आ जाएगी कि ये प्रॉट क्या है। प्रॉट इज बेसिकली प्रोटीन से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी डेटाबेसेस है, इस तरह से यूनिप्रॉट है, स्विस प्रॉट है, और पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक है। तो अभी मैंने सर्च किया था इंसुलिन इंसुलिन के जो इस जीन आईडी को यूज करते हुए, आई हैव जस्ट सर्च फॉर इट। तो इसकी जो पीडीबी में आईडी है, दिस इज 1xGB, और मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर वो आपको नजर आ रहा है, और इसमें हमें ये रिलीज हुआ था 1999 में, 216 सेम इंसुलिन। ओके, नाउ यू विल जस्ट फाइंड इट आउट कि ये कौन सी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, म्यूटेशंस है या नहीं है। ये नो म्यूटेशंस है, और डिपॉजिट टाइम है, किसने डिपॉजिट किया, उनके नेम्स हैं, मेथड किस मेथड के थ्रू जो है ये इन्होंने इसका रिजल्ट लिया था, और इसके अलावा यू विल फाइंड देयर लिटरेचर। और इस because as we have already studied that कि जो प्रोटीन, डीएनए, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो प्रोटीन इज वन ऑफ दैट मैक्रोमोलिक्यूल। अभी हमने इंसुलिन को सर्च किया है, और इंसुलिन पे वी हैव सम कंपाउंड्स, co-factors, you can say that, this which is alpha कोनोटॉक्सिन GI, ठीक है। इसकी चेन ए है, इसकी लेंथ 14 है, और म्यूटेशन नो है, और ये उसका स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के साथ कंबाइन काम करता है, ठीक है। दिस इज द कोफैक्टर, और ये उसका स्ट्रक्चरल वैलिडेशन है, और थोड़ी सी आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी।
लेकिन इफ यू फाइंड दिस सेम, अच्छा ये इसका 3D व्यू था, सम दीज आर द टैब्स. These are the tabs, and we are going to view the 3D view of that insulin. This is the insulin. अब मैंने जो आपको बताया था कि को फैक्टर है, दिस इज द को फैक्टर. एंड मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगी वहाँ आपको ऊपर सीक्वेंस में नज़र आएगा कि मैंने किस रीजन पर क्लिक किया है. इसी तरह से आप इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन इट. ओके, अब हम चलते हैं यूनिप्रॉट में. यूनिप्रॉट इज ऑल्सो data, specialized data of proteins. This is UniProt. Okay. यूनिप्रॉट भी बेसिकली सेम काम करती है जस्ट लाइक पीडीबी, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है. एनसीबीआई में आपने देखा सिर्फ आपको जो है प्रोटीन सीक्वेंस मिल जाता है, ठीक है, और पीडीबी में आपको उसके स्ट्रक्चर और थोड़ी सी उसकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी. लेकिन अगर आप इसी जीन आईडी को अगर हम सर्च कर लें और दिस इज नॉट वर्किंग, देन ओके we will just try to find it out के insulin है. चले, let me find it out again. um, okay, I was talking about जस्ट लाइक एनसीबीआई से हम फास्टा सीक्वेंस जो है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. फिर हमारे पास पीडीबी के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसकी समरी स्ट्रक्चर मिल रहा है, स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो इंसुलिन हमने अभी सर्च किया था. इसी तरह से 3D व्यूज का देख सकते हैं. एनोटेशंस में हम देख सकते हैं कि उसकी क्या एनोटेशन है. एनोटेशन मीन्स कि उसमें जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसकी क्या फर्दर डिटेल्स हैं, उसकी क्या लेबलिंग्स है. इसमें आपको जस्ट देखें कि को फैक्टर आपको मिलता है, ठीक है, और इसकी कौन से एक्सपेरिमेंट है, उसका सीक्वेंस क्या है, जो हमने जो था जो हमने सर्च किया था फास्टा सीक्वेंस एनसीबीआई में. अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि पीडीबी का यूनिप्रोट का कंपैरिजन करते हैं. हम इसी जो यूनिक आईडी है पीडीबी की हम सर्च कर लेते हैं यूनिप्रोट में. दिस इज द वेब पेज ऑफ यूनिप्रॉट, और यूनिप्रॉट पे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी. इससे और इंटीग्रेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो वो आपको मिल जाएगी. सो लेट्स कॉपी दिस सेम यूनिक आईडी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम इंसुलिन का ही सर्च किया था. अल्फा कोनोटॉक्सिन जो है इसका को फैक्टर है, इसका एक और को फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियो न्यूक्लियोलर जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन. अच्छा, ये दो प्रोटीन्स जो है दो स्मॉल फैक्टर्स कह लें, दो ऐसे कह लें कि कंपोनेंट्स हैं जो उस प्रोटीन के साथ मिल के काम करते हैं, ठीक है, और वो प्रोटीन कौन सी, जो इंसुलिन प्रोटीन थी. तो अब यहाँ पर इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपको इसको फिल्टर कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी पॉपुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से इससे रेलिवेंट व्यू, इसको टेबल व्यू है, टेक्सोनॉमी है, जीन ओंटोलॉजी में जाकर आप देख सकते हैं. तो अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, जस्ट हम ये इसका एक ग्रैंड टूर कर रहे हैं कि डिफरेंट डेटाबेसेस में किस तरह से काम हो रहा है. और इसको डिटेल में हम जाए तो
इसकी जीन ओंटोलॉजी दे सकते हैं, एंजाइम क्लास देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो फेच कर सकते हैं। तो आज का सेशन वाज ओनली अबाउट कि डिफरेंट डेटाबेसेस को हम किस तरह से जो है एक्सप्लोर करते हैं। सो वी हैव सीन दैट के जो यूनिप्रॉट है और पीडीबी है, पीडीबी बेसिकली प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है और यूनिप्रॉट में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस रेलिवेंट यूनिक जो इंसुलिन को हमने सर्च किया, इससे रेलिवेंट और डेटा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है मीन्स के डिफरेंट डेटाबेसेस ने अगर लोगों ने या रिसर्चर्स ने डेटा पब्लिश किया है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तो वो भी आपको मिल जाएगी और उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।